Alan control, Velma, come in please. Alan control. Alan control, Velma, I cannot hear you on channel 13, over. 50. Roger, course to 250, okay. 7.7 knots, sir. It's still increasing, right? Yes, still increasing, coming up now. Okay. Right now 8 knots now. Can we go up ahead now? Oh, we got about 2 miles still to go. Now we're just doing about 11. 290. Roger, 290. Speed is 10.9 knots. Okay, make 295. Roger, 295. Alang, a formidable industry in itself, is located in the Gulf of Kamdar, approximately 50 km from Bhavnagar city. It is considered to be the world's largest graveyard for sea vessels. The chirping of the birds is heard in the wee hours of Alang before it breaks into huge metallic sounds and the hustle bustle of the workers. We all know how ships are born, how majestic vessels are nudged into the ocean with a bottle of champagne. But few of us know how they die, and hundreds of ships meet their death every year. I came to Alang and quickly became enthralled with shipbreaking. I never heard of it or even thought about what happens to old ships until I researched Alang. There are around 180 shipbreaking yards in Alang, out of which 130 plots are operational. All these yards are governed by Gujarat Maritime Board, and they have given the yards on lease to the shipbreakers. Rising early, the workers have to prepare their own tiffins before scurrying to work. Some have to travel quite a distance because the plots are far from their shanties. Some workers manage their own conveyance, while most have to walk. Before starting their exhausting daytime, workers idle around and enjoy some banter.
ये मोबाइल लाया है ना, ये छोड़ दीजिए वो, नकाया निकल जाएगा। जरा चेक करो मोबाइल आए तो रखते आओ। उसका मोबाइल होगा वो निकल जाएगा बाहर। जाओ रखो मोबाइल, जब मना है तो क्यों लाते हो? ए, तू लाया है मोबाइल मुझे दीजिए। The workers have to be in their protective gear and carry their own attendance cards to enter the recycling yard. Panchmukhi Hanuman, the god of courage, is the principal devotee of the laborers. Laborers stand in columns and rows as per their job. As a part of the company's training program, the Mukaddam, or the supervisor of the plot, gives toolbox talks to the laborers. The toolbox talk addresses the concerns regarding working in a plot. What precautions should the laborer take to avoid accidents, rules and regulations to be followed inside the plot, and much more. यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 7 बजे आए सुरक्षित और 7 बजे सुरक्षित जाएं। इसी के साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब एक बार आप लोग को मना हो गया है, सीएमडी के तरफ से सर्कुलर आया है, मोबाइल लेके नहीं आना है, तो आप लोग क्यों लेके आ रहे हैं मोबाइल? मोबाइल की वजह से अलग अलग कितना दुर्घटना हो चुका है, कितना आदमी मर चुके हैं खाली मोबाइल की वजह से। फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो। एक बार जब बोल दिया गया कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, आपको 10 बजे ब्रेक मिल रहा है, 12 बजे ब्रेक मिल रहा है, 1 बजे ब्रेक मिल रहा है, 3 बजे ब्रेक मिल रहा है, 7 से 7 बजे ब्रेक मिल रहा है। बात करो ना यार, इतना मर्जी है जाके आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ये शान हो यार, एक बार तो समझो कि हाँ अगला मना कर दिया है, अभी तक नहीं था, चल रहा था, अब मना हो गया तो फिर भी आप लोग ला रहे हो मोबाइल, छुपा के ला रहे हो। नहीं जाना चाहिए ना। बीच आप करके कहीं भी अपने रूम पे रख दो, बोलते हो चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, हम नहीं रखेंगे यहाँ पे मोबाइल। अपना मोबाइल आप लोग अपने पास कहीं भी रखिए, लेकिन यहाँ अगर 2 अफसर पकड़ा गया, वह उसका कार्ड देकर वापस करेंगे, 1 दिन बैठाएंगे। अगर फिर हमने चेक किया, जिसका अगर मोबाइल मिला, कार्ड दे के बैठाया जाएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना? जाओ आप लोग। लेगा 1 घंटे का। अब एक कौन जाने का, सेफ्टी के बारे में पूछेगा, फायर के बारे में पूछेगा। मालूम है यार, एक काम करना ना, तू हमसे 1:30 बजे मिलना, भूलना नहीं हो। तुमको और एक आदमी और है, बुढ़ा एक है, कुछ बता देना, बंद जगह काम करने में क्या कुछ है, ऐसे कुछ समझा देना। हाँ ठीक है, तो समझा दो। ऑक्सीजन का 19.5 से 23% रहता है उसमें, जो है ना फाइल करना नहीं। एग्जाम है तो मान लो अगर बढ़िया बताए तो प्राइज मिलेगा। नहीं कोई पुराना आदमी हो नहीं, ये सही है, पढ़ा ट्रेनिंग लिया है, बता तो रहा। और एक फील्ड वाला एक बुढ़ा है ना, वो पढ़ा हाई स्कूल, 12 दिन पढ़ाई किया, उसको भेजो यार। ठीक है उसमें मिलेगा, जाएगा। 2 बजे यहाँ से आप जाओगे, 2 बजे सेमिनार है, 1:30 बजे जाओगे, 3:30 बजे 4 बजे तक हो जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। आप लोग ट्रेनिंग तो किया ना? हाँ, उसमें क्या बात है, उसमें देखने का, उसमें बताएगा। हाँ इधर आओ,
ये मेरा नाम शिवराम परिकर, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। तो मेरा तो उड़ीसा में घर है। हमारा वहाँ पे 1990 में बड़ा तूफान आया था, जैसा पानी में बहुत कुछ हमारा घर टूट गया। घर टूट गया, मेरा पढ़ाई था उसमें 7 में 6 में मैं हमारा गांव में 6 बच्चों तक था प्राथमिक विद्यालय। तो दूसरे गांव में जाने का हमारे को डोनेशन लगता था। जैसा उसी टाइम था हमारा 25 रुपया 30 रुपया डोनेशन लगता था दूसरे स्कूल पे जाने का, ज्वाइन फीस बोलते हैं। तो उस टाइम में हमारे को ज्वाइन फीस का भी दिक्कत होगा और इसी में घर भी चला गया। तो हमारी क्या है, हम लोग घर पे परिवार बढ़ गया, तो पिताजी का इनकम कम है। तो उस टाइम हमारा घर पे थोड़ा दिक्कत हो गई, खाने पीने में सब प्रकार व्यवस्था, पढ़ाई का खर्चा के लिए भी दिक्कत हो गई। तो हम बोलते हैं पढ़ाई कितना दिन करें, ऐसे इस तरह का कितना हम तकलीफ उठाते। तो कैसे कैसे करके मैं पढ़ाई 6 पास किया, 7वां तक ज्वाइनिंग हुआ। 7वां ज्वाइनिंग हुआ तो हमारा अर्धवार्षिक का परीक्षा दिया। मेरे वार्षिक परीक्षा हुआ ना, तो मेरे को वहाँ कपड़े लेने में, जैसे आज कलम खरीद करने में, किताब खरीद करने में, तो मेरे को थोड़ा ये सब बोलने में ठीक नहीं लगता है। मगर फिर क्या है, इतना मुसीबत हुआ तो आदमी से सोचा ये सब मुसीबत होने उससे बढ़िया किधर जाके थोड़ा नौकरी करो, 2 पैसा कमाओ, अपना माँ बाप घर का थोड़ा देखो। तो उसी टाइम में थोड़ा भावनगर या शिप ब्रेकिंग यार्ड में थोड़ा आदमी लोग आते थे, बोलते थे जाना है वहाँ पे, वहाँ काम करना है। तो मैं एक दिन दिमाग में बैठा घर पे अपना फादर मदर को बोला, मैं लंग जाना है। तो मेरा माँ और बाप मेरे को बोले नहीं जाने का, अब ये उम्र में नहीं, उम्र जाना है। तो मेरे को उसी में क्या दुख हो गया था, एक कलम खरीद करने में नहीं होता। कलम का उस टाइम कितना 3 रुपया रिनल्स पेन आता था पहले, 3 रुपया 3.5 रुपया में रिनल्स पेन आता था, वो नहीं हो पाता। क्या है भैया, क्या है? जानकी। कितने साल से आप बना रहे हो चाय? 30 साल से। यहाँ पे 30 साल से हो? ओ, और चाय बना रहे हो आप 30 साल से सबके लिए?
कितनों लोगों को आपने पिलाया होगा चाय यहाँ पे तो? बहुत आदमी के साथ After taking extensive permissions from the government body, Gujarat Maritime Board, which regulates ship recycling in Alang, and the plot owners, I got an opportunity to experience the vastness of a ship that was already 60% cut. The climb up to the ship's deck was perilous. The view I saw from there of the majestic sea and the vessel flabbergasted me. The grand scale on which the laborers worked inside the ship was mind-blowing. Ashok Kumar, the health and safety officer, was constantly guiding me inside the maze of the ship. Though the laborers worked in confined spaces, they complied with all necessary precautions. कार्ड बन गया है, दूसरा कार्ड बना है उसके लिए तो आप ले लेना कहीं उसमें कोई मगजमारी नहीं होगी। कार्ड दिखाओ, सामान ले खाना पीना नहीं आएगा बाटला पानी। The shipbreaking company provides them with gas masks, gloves, and boiler suits to wear when they use the blow torches.
cranes are ripping ships apart. Their metal hides peeled back by men in goggles wielding fire. Shock of innards, girders, joists, and wires. A rusted funnel toppling in slow motion. Workers wearing protective gear carefully segregate hazardous wastes like asbestos and glass wool. Atop ships far larger than I imagined are men, the size of fingernails. फिर यहाँ पे निकले बस। अरे अलग आ गया, हमारा गांव वाला साथी अलग आ गया, अलग आ गया। इधर ही तो छोटा बच्चा है, 18 साल उम्र में मैं इधर ही आ गया। छोटा बच्चा है, इसे प्लाट वाले कोई रखे नहीं छोटे बच्चे। बड़ी मुश्किल से मैं हरियाणा शिप ब्रेकिंग यार्ड प्लॉट नंबर 14 उसी में एंट्री हुआ। उसी टाइम मेरा शुरुआत अलग आना, बाहर देश आना। आया तो मतलब माँ बाप छोड़ के मैं आया, मैं कैसे रहूं तो आदमी को रोने लगे। रात को खाना नहीं खावे तो माँ की याद आवे, पिताजी का याद आवे, भाई का आवे, गांव का याद आवे। फिर भी मेरे को याद आवे तो आज पढ़ाई का नहीं हो पा रहा है, क्लब नहीं आ पाया। अभी कोई प्रकार का उस टाइम सेफ्टी का कोई काम नहीं देखता। जब ये अभी जो है कोई प्रकार का उस टाइम सेफ्टी का नहीं आता था। जो काम करते थे अलग में, उस टाइम सिंगल रोड था, लाइट नहीं था, बबुरानी, कोई प्रकार का काम का नहीं था। आदमी कष्ट करते थे, गरीब है आदमी, कष्ट भी अनुभव नहीं होता था। क्यों? पैसा थोड़ा मिलता था।
उस टाइम छोटा छोटा स्क्रैप उठाने के लिए मेरे को वहाँ नौकरी मिला, छोटा छोटा। उस टाइम कितना 35 रुपया 8 घंटा का मेरे को 35 रुपया मिलता था। हमारा खुराक कितना जाता था तो 300 रुपया महीना का खुराक जाता था। 300 रुपया 400 रुपया उस टाइम खुराक जाता था महीना का, अपना खर्चा कुछ था ही नहीं। डेंजर तो था, बहुत डेंजर है, डेंजर है, लाइन बहुत डेंजर था। तो मैं करंट हेल्पर में वहाँ के जो मेन आदमी था वहाँ में बोला करंट हेल्पर को, वो भी बोला बच्चा नहीं करना था। मैं बोला मैं करूँगा, मैं जीत पकड़ा, मैं करूँगा। वहाँ की जो सेठ जी से रहता था सेठ जी, मैं सेठ के पास मैं करंट हेल्पर करूँगा। तो करंट हेल्पर किया, मतलब मेरे को इतना भी अनुभव नहीं था, फिर भी मैं जीत पकड़ा। तो वो भी लोग क्या है, नौकरी से बच्चा है, जीत पकड़ा है, तो सेठ जी मेरे को मानते थे, ठीक है कर ले बेटा। मेरा काम किया तो मेरा रेट कितना होगा, 8 घंटा का 55 रुपया होगा, 55 रुपया हुआ, 1200 रुपया होता था, मेरा 300 रुपया बढ़ गया 1500 रुपया। तो मैं और खुश हो गया, मैं बोला 300 रुपया मेरा बढ़ गया, मैं खुश हो गया। तो हेल्प नहीं किया। तो स्क्रैप जो उठाते थे वो लोग का उस टाइम में 6000 5000 5500 रुपया वो लोग आता था। मेरे को थोड़ा उसमें आया, थोड़ा 5500 रुपया में, तो हमारे घर पे थोड़ा पैसा हुआ पड़ जाए, घर थोड़ा बना लो। घर तो टूटा हुआ है तूफान के टाइम में, मिट्टी का मकान है। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं 1.5 साल किरण का हेल्पर किया। तो किरण को भी थोड़ा सीखने में कैसे होता है क्या है वो भी थोड़ा हैंडल किया। बहुत उस टाइम में इतना मेहनत किया। जब 8 घंटे नौकरी करते थे ना अंदर, एक तो अपना ब्लॉक है और ऐसा ऑयल ग्रीस कचरा पट्टी धुआं धक्कड़, जो गेट का बाहर जाते ना उसको मालूम पहचान नहीं पाते वो कैसा है, कौन है आदमी, वो पहचान में भी नहीं आ रहे ये आदमी कौन है। कपड़े का कोई नहीं है, कोई जूता का नहीं, कोई गमबूट नहीं है, कोई बॉलर सूट नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है। उस टाइम में ऐसा रहता था। The majestic ship, which weighs up to an average of 5,000 tons or more, is broken down and cut by laborers of diverse cultures. The laborers have migrated from the states like Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, and Madhya Pradesh. The reason for the laborers to work in this dangerous environment is because of poverty and unemployment in their respective states. These folks were not the victim of migration. These folks were meant to survive. An old age adage goes, necessity is the mother of all inventions. This necessity of breaking down several thousand ships in 30 years, starting from the 1980s, led business people to look for a suitable shipbreaking site in India. The government did a feasible study of all possible sites on both the coasts of India, particularly in Gujarat. It was narrowed down to Alang on the west coast, near the sleepy town of Bhavnagar. The first reason was its long coast stretching up to 10 kilometer. The most important being its natural gradient of the geographical region. Alang is the only place on earth with a natural slope of 15 degrees, which helps the ship reach the shore without any power. The first vessel, MV Kota Tenjong, was beached at Alang on 13th February 1983. Since then,
the yard has witnessed spectacular growth and has emerged globally as a leading shipbreaking yard. All the workers wear helmets, safety jackets, and boots. Someone rushes with a helmet and instructs me on the precautions to be taken while going near the vessel. Most yards are clean and cemented platforms. Scraped steel, computers, and huge engine parts are correctly stored in neat and clear temporary storage facilities. Even half-cut ships display red ribbon warning signs to workers on duty. Nowadays, teams come from all over the world to do quality certification inspections of ships. About 90% of the shipbreakers in Alang have adopted the guidelines laid by the Hong Kong Convention since 2016. The shipbreakers are themselves putting their best financial efforts into the upliftment of the plots and the working conditions of the labourers. It imposes a statutory duty on the shipbreakers to ensure safe and environmentally sound removal and management of hazardous wastes. Ships to be recycled in India shall be required to obtain a ready for recycling certificate in accordance with the Hong Kong Convention. It is beneficial for the shipbreakers as they get the ships at discounted rate. इसके बाद क्या करोगे पता है ना, इसको लपेटेगा या टेप मारेगा, मैं टेप फेंक दूंगा चुपचाप। नहीं वो बात नहीं है। नीचे करो बस। Since the shipbreakers are following the HKC guidelines, indirectly
the laborers have started getting higher wages, better living quarters, insurance, health facilities, training, etc. Without the training certificate from the Gujarat Maritime Board, no workers can work inside a shipbreaking yard. हाँ बोल There is an exciting journey of how a ship reaches Alang for recycling. Most ships have a lifespan of about 25 to 30 years, after which they may not be economically viable for shipping, but still contain many materials that can be repurposed. Companies within the ship recycling industries are known as cash buyers. When they purchase a vessel with 100% cash, the cash buyer sells the vessel to the highest bidder in any one of the ship recycling industries in Alang. Upon delivery of the vessel in Indian subcontinent, it accepts a letter of credit as payment from their end ship recyclers, and it is estimated that at least 98% of vessels for recycling are sold via cash buyers. A vessel costs an average of 20 crores depending on its size and weight, which is measured in LDT. Once the ship is beached, the anchor is dropped down. The vessel's fuel tanks are completely drained, and the fuel is sold in the local market. The representative of Customs, GMB, GPCB, AERB, and Explosives Department go on board the vessel for inspection and take out all the radio equipment and radioactive chips, bring it to the ground and break it down so that it is not misused.
Alang isn't your typical town, and it offers enough clues to warn you. Rows of ships dot the roadside as you approach. What they sell is odd. How they sell is even more so. Stacks of wash basins and toilet fittings, old and worn out, are on display. Big and small commercial refrigerators, some rusting, are piled up. Steel pipes, faded anchor ropes, rusted iron chains, and used cables lie in heaps and are sold by weight. Marine stores sell things you don't easily recognize, from marine engines to oil pumps, air compressors, and chilling units. Used furniture and crockery shops abound. In deserted plots amid overgrown bushes, orange boys are wasting away, and small boats and floats are strewn around. Strong demands in the ship demolition sector have been tempered by the war in Ukraine, which is creating some significant uncertainty. During such unprecedented times, it becomes difficult to make substantial decisions due to the fear of unforeseen price changes, which is why most recyclers are looking for mid-sized tonnages and refraining from large-sized tonnages. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth.
सवार है. rocking gently, the majestic vessel parked at shore. Every day she calls one and she calls all, probably aware of nearing of the time when she will crumble. Still sits with the mast held high, breathing the final gusts of the wind, soaking in the salty waves crashing against her. She conquered the vast seas far and wide, reaching her final destiny. She is a giver. She listens to the loud clanking noises breathing into her. She becomes smaller each day. Still stand with the mast held high from sunrise through sunset. She gives birth to new lives as she crumbles. Every inch of her becomes a part of someone and something. She enriches the city she finally chooses to rest in. Pray for the seas that nourished her for years. Pray for the waves that sent her to you. Pray for the books and the grains that perished within her. Pray for the people who lived experiences in her.
but do not forget to pray for her, for she is a giver.